कार्ड डिस्कस करांगे क्यू कार्ड नंबर 59। तो अपना क्यू कार्ड हैगा डिस्क्राइब समथिंग यू टॉट टू योर फ्रेंड और रिलेटिव। तो ये बेसिकली वी आर सपोज टू टॉक अबाउट अ स्किल है ना, कोई स्किल हो सकती हैगी आ, कोई चीज़ जिहड़ी तुसीं किसी नूं सिखाई आ। ठीक है, तो बेसिकली आपां की दसना हैगा समथिंग दैट वी हैव टॉट टू आवर फ्रेंड और रिलेटिव, या फ्रेंड नूं या रिलेटिव नूं ये चीज़ सिखाई आ अपने, एंड वी आर सपोज टू डिस्कस अबाउट कि किहड़ी चीज़ सिखाई आ, क्यों सिखाई सी, कदों सिखाई सी। ठीक है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਯੂ ਟੌਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ, ठीक है, ड्राइविंग की गल कर लो, स्विमिंग की गल कर लो, कुकिंग की गल कर लो, है ना, कि इदां दियां जिहड़ियां स्किल्स हैगियां बेसिकली आपां दूसरे लोगों को दसदे आ। तां मैं की क्या, मैं क्या भी जिहड़ी स्किल की मैं गल करूँगी वो स्किल होर कोई नहीं बल्कि स्किल ऑफ ड्राइविंग हैगी आ। वैन इट वॉज तुसीं कुछ भी कह दो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, आपां कुछ भी इदां दा टाइम पीरियड दसता, फ्यू मंथ्स बैक, है ना, इन द मंथ ऑफ सैप्टंबर, ड्यूरिंग द समर वेकेशनस, ड्यूरिंग द विंटर वेकेशनस, वट एवर ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਾਸ ਫॉर। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਟ ਟੁਕ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਵੀਕਸ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਇਟ ਟੁਕ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਵੀਕਸ ਫॉर मी टू टीच दिस पर्टिकुलर स्किल टू दैट पर्सन। ठीक है, हाउ यू फैल्ट अबाउट इट। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ आई वॉज रियली प्राउड of my achievement, है ना, कि मैं पहली बार, this was my first experience of teaching something to another person, and honestly speaking when she or he was able to do good at it, I was really proud teacher at that time। तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस किया, है ना। तो आप इत्थे कह सकते हैगे आ हिंट दे विच मैं इत्थों स्टार्ट किया कि जिहड़ी अपनी डे टू डे लाइफ हैगी आ, तो मैं की क्या, मैं क्या भी इन अ डे टू डे लाइफ people often teach and learn new things from others, and today I'm gonna share my experience of teaching the skill of driving to one of my friends, है ना। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨਸ, ਕੁਛ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। कोई स्किल जिहड़ी तुहाडी डे टू डे लाइफ दे विच इंपॉर्टेंट हैगी आ, तां आपां कह सकदे हां कि लाइफ स्किल हैगी आ। तो मैं की क्या, मैं क्या भी टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द स्किल, लाइफ स्किल ड्राइविंग टू माई फ्रेंड दैट आई टॉट फ्यू मंथ्स बैक। टाइम पीरियड दसता, है ना, फिर आपां दस्सिया क्यों, है ना, क्यों सिखाउण। तो मैं क्या भी एक्चुअली इट वॉज द टाइम ऑफ summer vacation and I had practically had nothing to do during those times. So one of my friend asked me to teach him or her, kuch bhi keh lo, teach him the skill of driving. Initially I was bit reluctant ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ hesitation ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ, है ना। तो hesitant word भी तुसी यूज कर सकते हो, reluctant word भी यूज कर सकते हो कि initially I was bit reluctant to teach this particular skill to my friend because I've never taught this skill to anybody else in my life। तो मैं कदे इहनूं सिखाया नहीं सी। So how despite that fact I decided to take the risk and started teaching this particular skill in the mornings or in the evenings to my friend। And honestly speaking, he or she was a fast, कह सकते हैगे हो, या slow, कुछ भी word use कर लो, he or she was a slow learner। So it took around 2 weeks for me to teach this particular skill, and honestly speaking after all my guidance when she was able to drive properly, I was really proud। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ कर पा रहा सी, ड्राइव कर पा रहा सी प्रॉपरली, तो उस वजह करके मैं की सीगी, मैं बहुत प्राउड सी। ठीक है, और तुसी कह सकते हैगे हो कि माई जॉय न्यू नो बाउंड्स द डे आई सॉ हिम ड्राइविंग ऑन द रोड एंड इट वॉज ही वॉज और शी वॉज रियली कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। So this was the time when I taught a particular skill to one of my friends। ठीक है जी, अगे अपने कोले cues आ गए, what are the things that young people can teach to old people। So basically आपां कह सकते हैगे आ कि जिहड़ी टेक्नोलॉजी हैगी आ which is changing every day, so it becomes really difficult for old generation to cope with।
So मैं क्या भी as we know that technology is changing with every passing day, so it is really difficult for old generation to cope with this changing technology. And I think this is the one thing where youngsters can help the elderly to learn about it, like how to use ATM machines, how to use accelerators, how to use internet banking. So all these things can be taught to old ones by the young ones or by the youngsters. ठीक है जी. What skills can young people teach to old besides technology? Technology ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ है ना, besides technology. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ in today's changing world, youngsters can give many good opinions to the old ones, like about the fashion, है ना, about the modern lifestyle and values, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ 20 ਮਾਈਲਸ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਸਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੇਵ ਮਨੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੇਵ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ. So these things are changing with the time, and I think these are the things that youngsters can talk about to the old ones and teach them these things. Next आ गया why older people have problems in learning a new things. मैं क्या primarily it is because of the age, है ना. It is because of the age they may have some problems like forgetting things. Apart from that, being aged make them really tired easily, so it becomes really difficult for them to keep on learning for long time as they feel exhausted after a while. ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. How can next आ गया how can the young teach the old. So मैं क्या भी there can be many ways by which youngsters can teach the old ones about different things. First of all, they can give them regular classes. They can talk about that particular thing which old one wants to learn. Apart from that, they can share them the videos or audios related to that particular topic which will help old elderly to learn that thing easily. ठीक है. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ cue cards done ਹੋ ਗਿਆ. For joining offline or online classes, you can contact Max Overseas. That's all for today. Thank you, everyone.